Hello everyone. So today we are going to discuss UPSC CSC Prelims 2019 economy questions. Starting with the first question we have is, in a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others. What is the reason? So as we know that for deciding the poverty lines in India, various committees have been formed. So committees have deciding that the factors which are needed to consider the poverty in India. For example, there was a committee, that is Tendulkar committee, and which have decided a criteria, and that is that rupees 26 per day for the needs of a person in rural area and rupees 32 per day for the needs of the person in a urban area. Later on, it was in 2011 that it is changed to for month it is 8 to 6 per person per month in rural area and rupees 1000 per month for a person in urban area for satisfying the needs of the person. It is the criteria if the person is having the income below this, then it would be under poverty. So looking at the options, we have poverty rates vary from states to states. Second option we have is price levels varies from state to state. GDP varies from state to state and quality of public distribution varies. Question is why the official poverty lines are higher in some states. As we know that the production of all goods is not done in all the places. Let's say production of books. If the production center is in Delhi, let us say it is in Delhi, then the places, let's say some hilly areas, they need to buy it from those regions. Delhi transportation cost will be more, and more taxes would be there for the entry to other states. That is why the prices of the particular book will be more in the hilly areas. Levels in hilly areas is more for that book, then the poverty line will be decided on that factor. अगर वहां पर एक बुक लेने के लिए ही 10 रुपीज जा रहे हैं एंड वो बुक दिल्ली में 5 रुपीज में ही मिल जा पा रही थी, देन हाउ द पॉवर्टी वुड बी डिसाइडेड इन दैट स्टेट. वहां पर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो दे इज सो मच डिसिमिलैरिटी. सिमिलर केस में फूड का भी हो जाएगा कि अगर दिल्ली में कोई फूड 5 रुपीज का मिल रहा है, हिली एरियाज में वो 10 रुपीज का मिल रहा है, तो वहां पर तो पॉवर्टी की लाइन हायर हो जाएगी. वहां पर हर चीज को खरीदने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है हिली एरियाज में. तो सिमिलर वे में अगर किसी स्टेट में प्राइस लेवल्स ज्यादा है, तो वहां पर ऑब्वियस हो जाएगा कि पॉवर्टी लाइंस ज्यादा ज्यादा हाई पर होंगी. मतलब अगर एक पर्सन दिल्ली में है जो अगर पॉवर्टी क्राइटेरिया लाइन है 5 के ऊपर है, तो वो पॉवर्टी में नहीं आ रहा है. बट सेम केस ये हो जाएगा कि हिली एरियाज में 10 की लाइन होगी और उसके ऊपर जो होंगे वो पॉवर्टी में नहीं रहेंगे, बिलो 10 पॉवर्टी वाली लाइन होगी. तो प्राइस लेवल क्योंकि काफी वेरी कर जाता है स्टेट टू स्टेट, इसलिए ये वेरिएशन हम देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जैसे हमें दे रखा है कि ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट से ये हम देख सकते हैं क्या. ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है कि टोटल स्टेट की कितना प्रोडक्शन हुआ. अब उस टोटल प्रोडक्शन से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को कितना मिलेगा. टोटल के अंदर डिसिमिलैरिटी होती है, एंड दैट डिसिमिलैरिटी से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि पॉवर्टी कितने पर्सन फेस कर रहे हैं. जीडीपी स्टेट का हायर हो सकता है किसी स्टेट का, बट स्टिल ज्यादा पर्सन हो सकते हैं जो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं. इसलिए जीडीपी कुड नॉट बी अ फैक्टर जिसके वेरी करने से स्टेट की ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस ज्यादा हो जाए. नेक्स्ट है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वही गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, उनके वेरी करने से भी
कुछ गुड्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट अगर हम ओवरऑल बास्केट ऑफ गुड्स का सोचे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी गुड्स गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है कि प्राइस लेवल्स बहुत वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, इस वजह से कुछ स्टेट्स की पॉवर्टी लाइंस हाई हो जाती हैं, कुछ स्टेट की पॉवर्टी लाइंस डाउन हो जाती हैं। Next question is, the money multiplier in an economy increases with increase in which of the following? मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि लेट्स से वी हैव 5 rupees, और after some time those 5 rupees get invested in some place. Let's say 2 rupees invested somewhere, one invested somewhere, and three invested this way. The money is invested. Later on, this investment has created rupees 10. So this is how, if the money is invested in something, let's say this is invested in railway, this is in roads construction, this is in airways. So it helps us to make a profit of 5 rupees more. So this 5 rupees get multiplied to 10. It means it is multiplied by 2. So how can money be multiplied in an economy? Increase in CRR. So if CRR would be increased, then जो बैंक के पास मनी होता है उसमें से 4% जो अमाउंट होगा उसको आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना होता है। तो अगर रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, कैश रिजर्व रेशियो 4% था, अगर उसको 10% कर दिया जाएगा तो रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी कि अब जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा मनी लेंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि मनी मल्टीप्लाई नहीं बढ़ने वाला है। फिर है increase in the banking habit of the population. Banking habit increase होगी तो they'll invest more money, they'll deposit more money in the banks. That is how the banks will have more money to lend. It will have a proportional increase in the money multiplier. Next is SLR increase. So if SLR is increased, banks need to keep more than 18% in the banks. Now it is 18%. Banks have to keep 18% of their total amount in the banks. If it is increased more, then banks have to keep the more money in the banks. That is how the money to lend with the bank will decrease. Negative impact on the money multiplier. Increase in population of the economy. It cannot guarantee that the money multiplier would definitely increase. It is also not a good option. Next question is, Reserve Bank of India recent directives relating to the storage of payment system data, popularly known as dictat, command the payment system providers that एक रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टोरेज ऑफ सिस्टम डेटा स्टार्ट किया था, जिसको दिक्कत बोलते हैं, डेटा दिक्कत बोलते हैं हम। उसका क्या एम था? फर्स्ट ऑप्शन है, they shall ensure that the entire data relating to the payment system operated by them are stored in India only. It was a condition to save the data, to save the privacy of the people, to save the Indian companies also. So it was done by RBI for Indiaization of the goods, in indigenous storage, so that all the data would be stored in India, all the credit cards, debit cards data, and that is why they promote Rupee card more. Next option is, they shall ensure the systems are owned and operated by public sector enterprises. It was not mandatory. Even private enterprises in India can operate them. So it was not mandatory. Next option is, they shall submit the consolidated system audit report to the CAG of India by the end of calendar year. So the system audit report need to be sent to the RBI, but it should be done by the CERT. Emergency Response Team of India, Computer Emergency Response Team of India, which has to send the report to RBI regarding this. This option is also not correct. The first option is correct. Next question is, which of the following is not the most likely measure of the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee? Let's say in the beginning Indian rupee $1 is equals to rupees 35, and it has sliding to rupees 70. It's a situation. The Indian rupee is sliding. So in this situation, then what should be the measure the government or RBI is taking? First is curbing the imports of non-essential goods and promoting export. But let us say we are promoting export,
Then to increase the trade competitiveness, what has to be done? Um, Let us say there is a burger which is of rupees 10 in India, and in USA, let us say it is of dollar 1. Then definitely there would be a trade. बट लेट अस से एक सिनेरियो आता है जिसमें इंडिया के अंदर भी उस बर्गर का प्राइस ₹70 हो जाता है. सो इफ बर्गर का प्राइस इज ₹70, देन $1 is equal to ₹70. So they won't buy it here. Now our economy or our currency need to be depreciated more so that trade would be continued. Let us say ₹2.80. अगर मनी को एक्सचेंज करने के बाद रुपीज $1 इज इक्वल टू लेटर से ₹35 एट दैट टाइम, तो मनी को एक्सचेंज करने के बाद ₹35 मिल रहे थे, जिसमें मोर देन 3 बर्गर्स मिल पा रहे थे इंडिया से. तो ट्रेड की डायरेक्शन होगी ये. बट अगर इंडिया की करेंसी डेप्रिकेट हुई और $1 इज इक्वल टू 70 हो चुका है, इंक्रीज होके 70 हो गया है. बर्गर का प्राइस 70 है एंड $1 से ₹70 ही मिल रहे हैं. अगर अभी एक ही बर्गर मिल पा रहा है इंडिया में भी उस मनी से और यूएसए में भी, तो अगर एक ही बर्गर मिल रहा होगा तो ट्रेड नहीं होगा फिर. तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि इंडिया की करेंसी को डेप्रिकेट कर दो सो दैट ट्रेड फिर से कंटिन्यू हो जाए. तो इसके अंदर तो करेंसी को मोर स्लाइड करना पड़ेगा, जो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में है कि हमें स्लाइड ऑफ मनी को स्टॉप करना है. That could not be a good option. Next is encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds. This rupee denominated masala bond term is, we need to look at this. Let us say bond paper साइन करते हैं यूएस एंड इंडिया के बीच में. एक यूएस की कोई एंटरप्राइज है, एक इंडिया की एंटरप्राइज है, जिसमें इंडिया यूएसए से लेट अस से $1 ले रहा है. और अभी का जो टाइम है उस टाइम पे $1 इज इक्वल टू ₹50 जिस टाइम ये लिया. एंड लेट अस से ये लिया है 2 इयर्स के लिए. लेकिन 2 इयर्स के बाद जो कंडीशन वो ये है कि $1 इज इक्वल टू ₹70 हो जाता है. अगर $1 इज इक्वल टू ₹70 हो जाता है तो अब इंडिया को तो $1 ही रिटर्न करना पड़ेगा. लेकिन अगर इंडिया के एंड पे देखें तो जब इंडिया मनी लेकर आया था तो वो ₹50 लेके आया था, लेकिन जब इंडिया को देना पड़ रहा है तो ₹70 देना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है. तो अगर ये हम अगर रुपए में डिनोमिनेट करके लाए बॉन्ड को, मतलब हम यहाँ पे जो बॉन्ड पेपर साइन करके लाते हैं, अगर हम साइन करके लाते हैं कि ₹50 का बॉन्ड है तो हम ₹50 रिटर्न कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर हम $1 में ले आए हैं तो हमें $1 ही देना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि $1 में कितने रुपीस हैं, हमें अल्टीमेटली $1 देना है. तो उसमें इंडिया के एंड पे हमें लॉस रहता था, बिकॉज हमें हमारी करेंसी अगर डेप्रिकेट हो जाती थी तो हमें फिर भी डॉलर्स में उतना ही अमाउंट रिटर्न करना पड़ता था, जो कि ज़्यादा होता था. तो क्वेश्चन में यही है कि हम रुपए में डिनोमिनेट करके लेके आए, रिटर्न करना पड़े और इंडिया के बोरोवर्स को लॉस ना हो. ये एक अच्छा ऑप्शन है. नेक्स्ट इज ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. अगर हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और ज़्यादा करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी को फर्दर स्लाइड करेगा, स्लाइड डाउन. जैसे कि हम $1 अपनी इकोनॉमी में और ऐड करते हैं, हमारी इकोनॉमी में फिर ₹50 ऐड हो जाएंगे. $1 को फिर हम चेंज करके लाएंगे इंडिया के अंदर, तो दैट इज ₹50. वो ₹50 इंडिया की इकोनॉमी में आ जाएंगे. मोर मनी इज देयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ की इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज वाई हमारी करेंसी फर्दर स्लाइड होने लगेगी, स्लाइडिंग डाउन. तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन. Next is expansionary monetary policy. This time we do not need expansionary monetary policy. We need to follow the opposite one, because already our economy is facing the expansion. To reduce this, expansion is not a good option. Question is, consider the following statements. Purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods
and services in different countries. Yeah, this is what is done in purchasing power parity कि कुछ particular goods select कर लिए जाते हैं. Let us say it is some book, some pen, biscuit, wheat. Let's just say this is a basket of good. अभी इस basket of good का price सभी countries में check किया जाता है. USA, India, China, and so on. This is how the purchasing power parity exchange rates are determined in all the countries. So this is correct one. Next is in terms of purchasing power parity dollars. India is the sixth largest economy in the world. Actually, in case of GDP, India is sixth largest economy, but in case of purchasing power parity, India is third one. US and China are the one which are first and second. So first option is correct. Moving on, sixth question. With reference to the India's 5-year plans, which of the following is correct? From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. सेकेंड 5-ईयर प्लान से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को. काफ़ी इंडस्ट्रीज भी सेटअप की गई थी. तो इट वाज मेनली setting up the industries. It is correct. Next is the fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. जो फोर्थ 5-ईयर प्लान था वहां पे बहुत ज्यादा फोकस था कि इक्वेलिटी लाई जाए. हर किसी के पास इनकम होनी चाहिए या फिर हर किसी को सोर्सेज ऑफ इनकम प्रोवाइड किए जाए. ऐसा एम था फोर्थ 5-ईयर प्लान का. तो इट इज saying the same that it is the fourth 5-year plan is aimed to uh, in, aim to correct the trend of concentration of wealth at some place. So for maintaining the equality, it need to be divided properly. Next option is the fifth 5-year plan. For the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. In the fifth 5-year plan, majorly the focus was on Garibi Hatao. So this is not the one. So hence 1 and 2 are correct. Next question is which of the following is issued by the registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be the part of Indian stock market without registering them? So this certificate of deposit is issued by banks to the individuals. Commercial papers are issued by the companies while taking loan from some place. Promissory notes are also issued in market. Participatory note are those which are issued by the uh, CPI, we can say, and it is issued for the foreign portfolio investor. Participatory notes to participate in the foreign stock market. That is, for India is foreign for them who are coming to invest by this. Next question is, in the context of India, which of the following factors are the contributors to reduce the risk of a currency crisis? So if we are going to reduce the risk of currency crisis, what can be the good factors? The first one is foreign currency earnings of the India's IT sector. For reducing the risk of the currency crisis, let's say India is facing a recession. India needs more money. India needs the policy of expansion. How can this expansion be done? If more foreign currency earnings, it will get converted into Indian currency and India can use the money. Good option. Second is increasing the government expenditure. Actually, India is facing recession. So it is hard for us to increase the government expenditure. Remittances from Indians abroad. Good option. Because if the remittances would come to India, the crisis in Indian currency would be solved. Next question is which of the following is not included in the assets of Commercial Bank of India? Assets is something which is the all the money which the bank have or the property
gold, anything which is owned by the money, which is not the liability of the bank. Liability is something which bank has to give. Let us say advances. Advances is what banks have issued. Banks have given to something, someone, some person. So this is a asset of the bank. If let's say bank has given a loan of 100 rupees to a person, then person will be giving it back to the bank. It is asset of the bank. Bank can buy something with this. Bank can buy some stocks with this money. Next is deposits. Deposits which are present in a bank are not owned by the bank. It is not asset. Banks have to give it back. It is liability of the bank. Banks have to give it back to the person who have deposited it in the bank. Next is investment. Investments of the bank. Let's say banks have invested somewhere in stock market. Then this is asset of the bank. Next is money at call and short notice. If they have issued the money at call, it is their asset. Money at call is majorly that it is a change between bank 1 to bank 2 for their easy transmission of the service. So deposits is the one which is not the asset of the bank. Next question is consider the following statements. Most of the India's external debt is owned by the governmental entities. India's external debt uh, has various things like it is o- taken by the private sector also and government sector also. Government takes in the form of bonds, as we have a question about masala bonds also. Private sector takes in the form of external commercial borrowings. NRIs also deposit money in India. FDI comes to India, FII. So there are various ways in which we uh, take the money from various countries. But the question is that the most of the external debt, the part of external debt, उसका ज़्यादा part हमारे पास गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है. But ज़्यादा amount हम external commercial borrowings में लाते हैं and that is done by the private sector. तो this option is not correct क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं लेती. All of the external debt is denominated in US dollars. ऐसा ज़रूरी नहीं है हम US dollars में भी लाते हैं. हम लेट से चाइना से ले रहे हैं या फिर हम रशिया से ले रहे हैं या फिर जापान से ले रहे हैं. तो किसी भी कंट्री से लेंगे तो वो उनकी करेंसी में लेंगे. तो इट इज़ नॉट दैट सिर्फ हमारा सारा एक्सटर्नल डेब्ट डॉलर्स में ही है, किसी भी करेंसी में हो सकता है. All with this. So none is correct. Next question is economic cost of the food grains to the Food Corporation of India is MSP and the bonus which is paid to the farmers. उसके अलावा क्या देना होता है? तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो भी फूड ग्रेन्स पहुंचाए जाते हैं लेट अस से वीट, उसके बीच में एफसीआई वर्क करती है. एफसीआई गवर्नमेंट की एंड से वर्क करती है. एफसीआई फार्मर्स से परचेज करेगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम भी एफसीआई का होता है एंड फर्दर बैक टू द कंज्यूमर्स. ये पूरी साइकिल एफसीआई की हेल्प से होती है. तो उसके अंदर एफसीआई जब फार्मर से ले रही होती है तो फार्मर्स को एमएसपी दिया जाता है एंड इफ कुछ सब्सिडी होगी तो वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना चाह रही होगी वो सब्सिडी दी जाती है. जो भी अमाउंट होता है लेट अस से कि स्टोर करना है कुछ अमाउंट स्टोरेज के लिए चाहिए वो एफसीआई को दिया जाएगा या फिर मूवमेंट कराना है वीट का. वीट इज लेट्स से स्टोर इन दिल्ली, सो दिल्ली से उसका मूवमेंट अगर लखनऊ किया जाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर कोल्ड स्टोर्स का कॉस्ट सारे चीज़ें प्रोवाइड की जाती है. तो वो चीज़ें
इकोनॉमिक कॉस्ट में काउंट की जाती हैं, जो भी उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। एफसीआई जो फार्मर्स को पे करेगी, उसके अलावा क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसको स्टोर करना पड़ रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, पर्टिकुलर स्टेट तक उसको पहुंचाना पड़ रहा है, फर्दर डीलर्स तक भेजा जाएगा, देन उसकी डिलीवरी कंज्यूमर्स तक होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको इकोनॉमिक कॉस्ट में काउंट किया जाता है। तो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स जब फार्मर से खरीदा वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ, एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करने तक उसको कहाँ स्टोर करना पड़ा, कहाँ से लेना पड़ा, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, सारी चीजें काउंट होती हैं, वो सब इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट रहेंगी। Next is the chairman of the public sector banks are selected by the Banks Board Bureau. Question is, what was the purpose of Intercreditor Agreement which was signed by the Indian banks and the financial institutions recently? So this was an agreement which is signed majorly क्योंकि हमारे स्ट्रेस्ड एसेट काफ़ी बढ़ रहे थे, बैंक्स फेस कर रहे थे कि स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग कि जो भी लोन लिया गया था उसको उसका रीपेमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, और ये उन केसेस में ज़्यादा था जहाँ पर कंसोर्टियम लैंडिंग थी। कंसोर्टियम लैंडिंग का मीनिंग होता है कि कुछ बैंक्स ने कंबाइन करके वो लैंडिंग दी थी, जैसे कि बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, तीनों ने मिलके 100 करोड़ का कोई लोन किसी कंपनी को दिया, से 50 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, सबने मिलके ये एक लोन दिया है। और ये लोन एक्चुअली काफी बड़ा होता है, अगर किसी कंपनी या कोई बड़े कॉर्पोरेट को दिया जाता है तो फिर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। कुछ कोई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी जो फंड कर सकती हैं इंडिया के बैंक्स को, तो उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अगर वो उस कंपनी को फंड कर पाए, तो लेट्स से कोई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है and they're capable of funding 50 crores, तो they can handle the situation and they can save the companies from going into non-performing asset or stressed asset, and further going through the low performance of the banks। इस सबको सेव करने के लिए इंडिया के बैंक्स ने एग्रीमेंट साइन किया था कि जिनके भी जो भी लॉन्स हैं जिनका जो स्ट्रेस एसेट में जा रहे हैं उनको सेव 50 करोड़ से ज़्यादा हैं, ज़्यादा वाले लॉन्स हैं, तो उनके लिए एग्रीमेंट साइन किया ताकि उनको सॉल्व किया जा सके। ऑप्शन इज दिस कि अगर वो कंसोर्टियम लेंडिंग से किए होते हैं एंड 50 करोड़ से ज़्यादा वाली लेंडिंग होती है, तो उसके लिए एग्रीमेंट था। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।